Today in our session, I'm going to start a very new poem, Voice of the Rain. अभी तो हमारे पास में वी आर हैविंग द 10th स्टैंडर्ड में जो अब आपके पास बुक है वो बहुत ही अच्छी है। मतलब थोड़ा चेंज हो चुका है। पहले हमारे पास एक बुक थी, मतलब वी हैड वन मोर बुक। तो उसमें जो है वी हैड डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हाट यू कॉल एज लेसन्स। खुशी हैड दैट एंड इन दैट वी हैड अ पोयम। मतलब हमारे पास एक पोयम था, पोयम ऑफ द अर्थ है, कुछ ऐसा कुछ नाम था, आई डोंट रिमेम्बर। दैट पोयम एंड दिस पोयम इज वेरी सिमिलर। नाउ when we come to the poem, what is the poem about? What are the things we'll be getting in our chapters? मतलब हमें तो सिर्फ ये कि एग्जाम्स में what kind of questions can we get, means even though it is definitely what we call as only the RTCs, but up you can expect both RTC as well as a long question also. बहुत ध्यान से इस पोयम को पढ़ना। थोड़ा सा अलग है ये पोयम एज कंपेयर टू एनी अदर पोयम। लाइक हमारा पहला पोयम था दैट वाज फोटोग्राफ एंड दैट डेल्ट विथ द मेमोरी। सेकंड हमारा जो था लेबरनम टॉप which had something some different ideas. यहाँ जो वॉइस ऑफ द रेन है ना, दिस इज एक्चुअली अ डायलॉग बिटवीन द पोएट एंड द रेन। मतलब ये जो पोयम है वो एक डायलॉग है। डाय का मतलब होता है बच्चा दो, जिसमें दो लोग होते हैं। मोनोलॉग होता है एक। तो डायलॉग मीन्स टू पीपल इन्वॉल्व, जिसमें एक तरफ पोएट है और दूसरी तरफ रेन है। नाउ यू कैन इमेजिन, रेन बात कर सकती है। कल जब बारिश आएगी तो आप लोग बात करके देना कि भाई आपसे वो बात कर रही है या नहीं कर रही है। बट व्हेन इट कम्स टू द पोएट्स, मतलब हम कहते हैं ना जो कवि होते हैं ना, उनकी कल्पना कुछ अलग होती है। कवि की कल्पना कुछ अलग होती है। उनको तो आंखों के अंदर भी झील दिखाई देता है। अब आंखों के अंदर तो झील तो नहीं होता है ना, और उनको तो चांद का टुकड़ा लगता है। बट इन द रियल मून इज अ सैटेलाइट, isn't it? अभी तो हमारा चंद्रयान जो है दैट हैज गॉन टू द मून्स ऑर्बिट। और कवि जो है वो कहता है कि चंद्रमा की जैसी खूबसूरत, चांद में भी दाग है। हम तो ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। सो व्हाई आई एम यूजिंग इट कि रेन बात नहीं करती है, बट हियर इट इज एपिटोमाइज्ड, इट हैज बीन पर्सोनिफाइड एज अ ह्यूमन। कि अगर रेन बात करती तो व्हाट इट वुड हैव थॉट। तो पोएट कहता है, मतलब देयर वाज अ कन्वर्सेशन जिसमें रेन से वो पूछता है हु आर यू, एंड द पोएट इज सरप्राइज्ड। आपके पेपर में ही क्वेश्चन आता है, बैक में भी दिया हुआ है कि वो क्यों सरप्राइज हो जाता है। बिकॉज हम रेन से तो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना कि इट वुड गिव एन आंसर टू अस। लेकिन जो पोएट है ही इज सरप्राइज बिकॉज द रेन रिप्लाइड टू हिम। और रेन जो है वो अपने आप को बोलती है, आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ। इट कॉल्स इटसेल्फ एज द पोयम ऑफ द अर्थ। मतलब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोयम ऑफ द अर्थ? मतलब उसका कहना है कि जो अर्थ के, आई एम सॉरी देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स विद साइंस बैकग्राउंड, बेटर देन मी आई नो, बट जो हम लोग फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड में रिदमिक साइकिल पढ़ते थे ऑफ रेन, रेन साइकिल, आई रिमेम्बर आई यूज टू मेक द डायग्राम फॉर द स्टूडेंट्स। और मैं कहती थी कि जो रेन है, वाटर जो है दैट evaporates, it goes, then it condenses, then it evaporates, it forms into clouds, and then it comes back as rain.
और ये जो पूरा साइकिल होता है उसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। आपके बैक में क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आपके बैक में है। या so this water cycle ko the rain describes in a poetic manner. It says that she is the poem of the earth. She सेम जो मैंने आपको वाटर साइकिल बताया ना, यही चीज को वो मतलब रेन बोलती है। दैट शी स्टार्ट्स फ्रॉम द लैंड एंड द सी। मतलब जो लैंड है जब वो गर्म हो जाता है, सी जब गर्म हो जाता है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लैंड, देन इट गोस टू द स्काई। मतलब वो जो पोएम रेन बोल रही है वो मैं बता रही हूँ। यहां पर उसका कहने का मतलब है इट राइजेस टूवर्ड्स द स्काई टू फॉर्म इनटू क्लाउड्स, एंड देन क्लाउड से इट कम्स बैक एज अ रेनफॉल। तो ये जो रिदमिक साइकिल है उसको वो मतलब कि टू लाइंस में डिस्क्राइब करती है कि आई अराइज फ्रॉम द इम्पैल्पेबल सी, आई राइज टूवर्ड्स द स्काई एंड देन आई कम डाउन, आई डिसेंड। वो इसी चीज को इट डिस्क्राइब्स एज अ रेन साइकिल। एंड देन इट सेज कि व्हेन शी डिसेंड्स, जब वो पानी बनकर नीचे वापस आती है, then it removes the dirt layer from the earth। जो अर्थ के ऊपर डर्ट लेयर है, जो गंदगी है, जो मिट्टी है, एटोमीज है, उन सबको वो हटा देती है। इट मेक्स द अर्थ ब्यूटिफुल ग्रीन। बारिश के बाद आप देखिए कितना ग्रीनरी रहता है। सो इट गिव्स ग्रीनरी, इट ब्यूटिफाइज, इट प्योरिफाइज द अर्थ। एंड देन यहां तक वो मतलब कि इट टेल्स कि हाउ इट इज यूजफुल टू द अर्थ। देन शी क्लेम्स, शी मतलब रेन, दैट अगर रेन ना होती, इफ द रेनफॉल वाज नॉट देयर, देन द अर्थ, जो अर्थ के अंदर जो आपके छोटे छोटे से सीड्स हैं, अगर उनको पानी नहीं मिलता, then they would have become only seeds, they would have not grown into crops। so it gives birth to the crops, यानी कि she is the poem of the earth, she brings life to the earth। यहां तक बेटा पोएम जो है, सॉरी जो वर्ड्स है वो रेन ने बोला। देन देयर इज वन क्वेश्चन एट द बैक ऑफ योर एनसीईआरटी। लास्ट के जो दो लाइंस है दे आर रिटन इन पैरेंथेसिस, यानी कि ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं। और बड़ा ही रिपीटेड क्वेश्चन है कि व्हाई द लास्ट टू लाइंस आर रिटन इन पैरेंथेसिस। दैट इज बिकॉज इट इज नॉट स्पोकन ईदर बाय द पोएट नॉर बाय द रेन। ना ही वो पोएट ने बोला है और ना ही उसे जो है रेन ने बोला। इट इज एक्चुअली द फीलिंग्स कि जैसे म्यूजिक है, देर इज अ पैरेललिज्म ड्रॉ। जैसे म्यूजिक है विच ही कॉल्स एज द हार्ट ऑफ अर्थ, वो कहता है जैसे म्यूजिक अपने आप आता है चाहे उसे कोई सुने या ना सुने, इट गोज बैक। सिमिलरली चाहे आप रेन को एक्नॉलेज करो या ना करो, एक्नॉलेज मतलब आप उसको तारीफ करो उसकी, मतलब उसको यस इट कम्स, रेन इज इम्पोर्टेंट, आप उसको समझो ना समझो, इट गिव्स whatever it wants to give back to the earth and go back to its soul। जहां से वो आती है वहीं पर वो वापस चली जाती है। whether you realize its importance or not, it does its duty। because the poet is bit rhythmic, इसीलिए उसने जो है रेन एंड म्यूजिक में जो है पैरेललिज्म ड्रॉ किया है। so that is the poem the voice of the rain। it's written by Walt Whitman।
The theme here, it is already written. The poet signifies the eternal role of rain in nurturing, quenching and purifying the earth. मतलब अर्थ को बढ़ाने में, क्वेंच का मतलब होता है बेटा आपके प्यास को बुझाना. यहां मैंने क्वेंचिंग इसलिए लिखा है बिकॉज द ड्रॉटेड लैंड, जो सूखे लैंड होते हैं वो प्यासे होते हैं. When the rain falls on them, then only the crops can grow. It beautifies the earth. It purifies the earth. It also emphasizes that whether noticed or unnoticed, the rain does its job. In this, you have a number of poetic devices, basically personification, metaphor, hyperbole. मतलब ये एक्चुअल में सेम को ही हमने पर्सोनिफाई भी किया है, मेटाफोर भी यूज किया है और हाइपरबोल भी. ऑक्सीमोरन यानी कि यूजिंग ऑपोजिट वर्ड्स बहुत सारे हैं. पैराडॉक्स, इमेजरी एंड पैरेललिज्म. The central idea is rain is a significant process for earth and there is no rhyme scheme. It is written in a free verse. So that's the main crux of this entire. Now let us come to the poem along with NCERT. Now the first line, it is spoken by, क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बड़े छोटे छोटे से. Who spoke this line? And who art? Art मतलब यहाँ पर it is the old English. Who are you? Said I to the soft falling shower. यानी कि यहाँ पर सॉफ्ट फॉलिंग का मतलब है हल्की हल्की बूंदा बांदी, ड्रिजल. Which strange to tell, आपके पेपर में आता है कि why was it strange to tell? Why did the poet felt it was strange? Because the rain responded to his question. क्योंकि रेन ने उसके क्वेश्चन का जवाब दिया, इसीलिए इट वॉज स्ट्रेंज एज हियर ट्रांसलेटेड. अब यहां से लेकर यहां तक बच्चे, एवरीथिंग इज स्पोकन बाय द रेन. यहां से लेकर यहां तक जो है, एवरीथिंग इज स्पोकन बाय द रेन. आई एम द पोयम ऑफ अर्थ. ये जो पोयम ऑफ अर्थ है, इसको हम personification भी बोलते हैं because the word I has been used for rain. Now rain is not a human, but यहाँ पर it looks as if it is speaking. Poem of earth is also metaphor because it is here, it is comparing itself. Said the voice of the rain. अब बहुत ध्यान से सुनना. eternal मतलब always, never ending. I rise impalpable मतलब without any shape, out of the land and the bottomless sea. Now bottomless sea is transferred epithet also, and it is also exaggeration, hyperbole. मतलब वैसे तो बॉटमलेस सी का मतलब होता है द सी डजंट हैव एनी बॉटम. इसका मतलब है कि आप सागर की जो गहराई है उसको नहीं देख सकते. यू कैन नॉट मेजर द डेप्थ ऑफ द सी इज हैविंग. बट यहां पर उसका कहने का मतलब है कि द सी मतलब फ्रॉम द सी एंड फ्रॉम द लैंड इट राइजेस, इट कम्स आउट. अब देखिए लैंड एंड सी जो है बच्चा, दे आर ऑपोजिट. लैंड का ऑपोजिट होता है आपका सी. अपवर्ड टू हेवन, whence, vaguely
formed, altogether changed, and yet the same. अब यहाँ पर changed and same दोनों opposite. Upward to heaven मतलब towards the sky, मतलब it rises and it moves towards the sky. Vaguely formed मतलब shapeless. Vaguely formed मतलब shapeless. The clouds do not have any shape. हम बनाते हैं clouds की, but the clouds do not have any shape. यहाँ पर उसका कहने का मतलब है it forms into clouds. The clouds are shapeless. Vaguely मतलब without any shape. It rises from the land and the sea. Then it moves towards मतलब कि impalpable we cannot, and then it becomes clouds. I descend. Descend का मतलब होता है come down. Now upward and descend दोनों आपके opposites. To lave मतलब remove. The draughts मतलब सूखा, atomies मतलब dirt, dust layers of the globe. यानी कि it cleans and purifies the earth. And all that in them without me were seeds only latent unborn. मतलब if rainfall is not there, then the seeds will not grow to plants. They would remain only seeds. Without me were seeds only, matlab if the rain was not there, the seeds would have not grown into crops. And forever, by day and night, matlab every time, day and night, matlab always, I give back life to my own origin. Means it starts from the sea or the land, it goes towards the sky, it becomes a cloud, once again it falls down as the rain. यानी कि जिस फॉर्म से वो स्टार्ट हुई उसी फॉर्म से वो वापस अंदर, and make and purify and beautify it. यहाँ पर जो it है, it has been used for the earth. It gives life to itself. It has a rhythmic cycle. The last two lines are put in the parenthesis. आपके बैक में भी क्वेश्चन है कि why it has been put in the parenthesis, because these lines are not spoken. These are the ideas of the poet. For song issuing from its birthplace after fulfillment wandering. मतलब यहाँ पर उसका कहने का मतलब है जो सॉन्ग्स होते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम द सोल. Music starts from soul. After fulfillment wandering मतलब जब गाना अपना निकल जाता है इधर उधर. Wrecked or unwrecked मतलब whether you have acknowledged or not. It returns back to the soul itself. Similarly, whether you have noticed the rain or not, it would complete its duty and it would go back to its own origin. These are the pair of opposite words which are placed in this poem.
land, sea, change, same, upward, descend, day, night, rect, unrect, and these are all called as oxymoron. I'm once again repeating the same, and then I'll tell you what are the poetic devices along with the NCRT. And who art thou? Means who are you? This question was asked by this. यहाँ पे आपके पेपर में आता है कि कौन कौन से लाइंस पोएट ने बोले थे. So the poet only asked, who are you? And the rest of the poem, from I am the poem of the earth till the end, till beautifying it, यहाँ तक rain ने बोला. And the last two lines are put in the parenthesis because it was not spoken, it is only an idea. And it was strange for the poet because he could hear the rain speaking. उसके लिए वो एक स्ट्रेंज था क्योंकि उसने रेन को बोलते हुए सुना. And the rain said, I'm the poem of the earth. Here it is personifying itself and it is also a metaphor. Means यहाँ पर उसका कहने का मतलब है, it is one of the most important source for the earth. It is one of the most important source for the earth. Then it says, eternal I rise palpable out of the land and the bottomless sea. Matlab every time, regularly, always, I start without any shape. You cannot touch. I move and I rise towards the heaven. Heaven here is for the sky. Matlab jo aapke, when the water evaporates, it moves towards the sky, where it forms into shapeless clouds. Whence matlab where. Whence matlab where. Where it forms into shapeless clouds, even though it has changed. Why it is said change and the same? Because change इसीलिए क्योंकि वो water से water vapor बन गया है. लेकिन है तो सेम ही ना. They are the forms of water, what we call in our physics or chemistry, solid, liquid and gas. It is solid, liquid and gas. वही तो है. So वही उसी चीज को, मतलब the same thing has been said in a poetic way, that even though it rises as it evaporates, but it is the same. Water ही तो है जो evaporate हो गया है, and it has formed into shapeless clouds. Then once it is formed into shapeless cloud, it comes down. It comes down. किसके लिए? To lave, to wash out, to remove the dross. जो आपके क्रॉप्स हैं, जिनको पानी चाहिए, जो जमीन है, जो लोग हैं जिनको पानी चाहिए, it gives water to them. It removes the dirt layer, the dust layers. It cleans the globe. It brings greenery to the planet. And also, if the rain doesn't come, then those seeds which are hidden, आप देखिए सितंबर का जब मंथ आता है जिसको हम लोग ऑटम मंथ बोलते हैं, all the leaves are yellowish and then they fall down, and then once again they grow into crops. Similarly, the agricultural rhythmic cycle, जो आपके farmers होते हैं, they wait for the seeds to grow, and it is only because of the rainfall, because most of the farmers are dependent on monsoon. So when the monsoon comes, when the rain falls, then only these hidden seeds, hidden मतलब हम तो seeds को किस में डालते हैं, मिट्टी के नीचे ही तो डालते हैं. Why they are said as hidden? They are not hidden. Means we sow the seeds. वो जो है, they would never grow into crops if rainfall is not there. And then it says,
forever by day and night, मतलब regularly, always, it comes, it goes, and it gives origin to its own, so it gives life to its own origin. जिस ओरिजिन से वो स्टार्ट हुई थी वैसे वापस वो चली जाती, and thus purifies and beautifies the earth. It completes a cycle. It gives life to everyone. It is the most awaited by the farmers, by the people, by the crops. So that is why it calls itself as a poem of the earth. Then the last two lines are put it in the parenthesis, which says that music starts from the soul. Music, जो यहाँ पर जो म्यूजिक है ना, प्लीज डोंट कंपेयर योर म्यूजिक विद योर what you call as the Neha Kakkad and that all Kakkads. Please, यहाँ पे music is something which is from the soul. So it says whether we acknowledge or not, music fulfill करता है अपने needs को. Similarly, whether we acknowledge or not, whether we respect or not, जो rain है, it would complete its cycle on itself. That is why the last two lines are put in the parenthesis. I'm again and again repeating, since this is question of the from your back only, and it also comes in the exam. So that is what we call as poem of the earth. This is the chapter Voice of the Rain, right? So now we would be doing the important what we call as poetic devices which are given in this poem. As I've already told, the poem is written in personification. Then you have alliteration, you have oxymoron. जैसे इसमें आप देखिए that, them, without, me, work, they are all alliteration. Then if you see and, it is anaphora. You have anaphora also. So there are number of poetic devices which I have already mentioned here also. Imagery, parallelism. Parallelism है rain और music के बीच में. Rain and music के बीच में it is parallelism. Parallelism का मतलब होता है something which is going together. आपने तो अपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, parallel lines. So they go together but they don't meet. So that is parallelism. And in literature also parallelism का मतलब होता है something which is going together. दोनों को उसने compare किया है using the poem. So that is what we saw. So let us come to the poetic devices of the of the poem. These are all oxymorons I have already written here. All these: land, sea, change, same, upward, descent, day, night, rect, unrect, all of them are oxymoron. Then ये जो and तीन बार आपके आया consecutive lines में in the very beginning, so it becomes anaphora. Most of the time you have the मतलब इसके अंदर आपका यही आता है कि what is the मतलब की oxymorons used in this poem. This is parallelism. म्यूजिक एंड रेन को जो है पैरेलली ड्रॉ किया है, मतलब दोनों वही काम करते हैं. म्यूजिक को भी एक्नॉलेज करो या ना करो, इट स्टार्ट फ्रॉम द सोल एंड इट एंड्स इनटू द सोल. रेन को भी एक्नॉलेज करो या ना करो, इट स्टार्ट फ्रॉम द लैंड एंड इट अगेन गोज बैक. सो दिस पैरेललिज्म. Then we have a number of alliteration like that, them, without, work. अगर आप इनको देखो तो they are all the examples of alliteration. And all others I have written. जो यहाँ पे bottomless sea है,
It is actually a hyperbole. मतलब exaggerate किया है. Hyperbole का मतलब होता है something hyper को हम बोलते हैं ना, क्यों इतना hyper हो रहा है. Hyper means something excessive. So the poet has exaggerated the depth of the sea. And you can also say it as transferred epithet because bottomless is adjective and sea is noun. So transferred epithet matlab it is relating to the depth of the sea. Some of the experts they take hyperbole, some of them take it as transferred epithet. That is why I've used both of them. And then you have so in this poem you have personification, metaphor, hyperbole. Paradox is something very बिल्कुल जिसको कहते हैं ना पैराडॉक्सिकल सिचुएशन. अभी जैसे उसने पूछा मुझसे कृष्णा ने दैट व्हाई देयर इज ड्रॉट इन सम ऑफ द एरियाज, सम आयरॉनिकल सिचुएशंस. एंड ये जो लिखा है eternal I see, then these are all also a kind of imagery. मतलब आप एक इमेज को क्रिएट करते हो अपने सामने. लाइक आई हैव क्रिएटेड दिस इमेज इन फ्रंट ऑफ यू कि जब रेन आता है तो कैसा लगता है. सो दैट इज व्हाई द इमेजरी वर्ड हैज बीन यूज्ड. So this is what the poem says. That is voice of the ring. The summary is also there. All the poetic devices are there, and then it is along with the NCERT also. It will all help you, all of you.